एआई समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं के विरोध पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, कल जो कुछ भी हुआ मुझे यकीन नहीं है कि वह सही भावना से हुआ होगा, लेकिन अगर भारत सरकार या बीजेपी इतनी शर्मिंदा है तो उन्हें तब शर्मिंदा होना चाहिए था जब एक यूनिवर्सिटी और कुछ दूरी कंपनियों ने चीनी प्रोडक्ट्स को अपना बताया था। जब प्रधानमंत्री और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री खुद ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस समय इससे देश को कोई नुकसान नहीं होता। मैं समिट में था, मैंने इस तरह के समिट ऑर्गेनाइज किए और मैंने कभी ऐसे अस्त व्यस्त समिट नहीं देखे जहां ध्यान का केंद्र प्रधानमंत्री हो, ना कि इनोवेटर्स और बिल्डर्स, ना कि वे लोग जो नौकरियां पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाकर देखें कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स इस इवेंट के बारे में क्या कहते हैं। भूल जाइए कि कांग्रेस क्या कहती है। भारतीय इनोवेटर्स और भारतीय बिजनेस हेड्स इस इवेंट के बारे में क्या कहते हैं। Happened yesterday. I'm not sure that was in the right spirit. But if the government of India or if the BJP is so embarrassed, they should have been embarrassed when an university and a few other companies projected the Chinese products as their own. And that was put up by the Prime Minister, the Minister of IT, who deleted it now. So when the Prime Minister and the Minister for IT and Electronics themselves are promoting such things, that time it does not harm the nation. That time the nation is not under disgrace. And more importantly, I was there at the summit. I have organized summits like this. I've never seen such chaotic summits where the center of attention is the Prime Minister and not the innovators and the builders, not the people who are creating jobs. There were more pictures of Modi ji than signages within the venue. This became a one-man show. It was supposed to showcase the demographic dividend that India has. It was supposed to showcase the innovations and talent pool that we have. But what happened? BJP views their No. it is a culture of Congress. Rahul will go outside and criticize the India. And So let international- BJP answer our questions. Please go see on social media what international delegates have to say about the event. Forget what Congress has to say. What do international delegates have to say about the event? What do Indian innovators, Indian business heads have to say